Hello everyone, I'm back again. Thanks for joining us for the special occasion celebration of World Wellness Weekend and Indian Wellness Tourism. I am just waiting for my friend Smita Jaikar who will be joining us soon. So friend, this is a special day celebration weekend actually celebration for the special awareness creating about the Indian wellness tourism as well as for the World Wellness Weekend. World Wellness Weekend which is started by the JNG and it is celebrated almost in the 150 countries. And I'm glad to be part of this all these initiatives and apart from that World Wellness Weekend celebration, apart from that, Indian Wellness Tourism. Indian Wellness Tourism awareness created by me uh, in 2000, I think so 2008, when I first time started creating awareness about the fairs which is inviting the people from the all over world. So we have the traditions which we can definitely celebrate and of course explore on the world platform to invite the international tourists to visit different kind of festivals, different kind of spiritual programs, as well as what we are talking about today about the wellness. So what wellness is teaching us actually, thanks a lot Aparna for joining us. I can see the lot many friends are here. Pooja, thanks a lot. I'm just waiting for Smita Jaikar to join us soon. She will be shortly joining us. Smita Jaikar, the name behind spiritual wellness, who has been spreading the huge awareness about the spiritual wellness. Friend, there are the lot many confusion about the what everyone is nowadays talking about the wellness, but then confusion is occurring because the what exactly is the wellness and how people should connect with them with the well-being lifestyle as well as what exactly is the industry about. So we are going to shortly share, as I mentioned, Smita Jaikar, a name behind the spiritual wellness. She has been spreading the spiritual wellness along with her acting passion about the acting. She is a well-known name in the film industry, and she has been acting Marathi as well as the Hindi movies. Everyone is knowing this familiar name, and of course she is going to discuss about how spiritual wellness is giving the benefit in her own life. She has been creating this awareness from many years, and I am glad to be part of her journey, as well as the friend of, like I would say, the very good friend of mine. And really, I am fortunate to hear her every time. I can see her passion, how she is well connected with the spiritually with
her own soul and own body. So definitely you will enjoy her session. Just waiting for her to join soon. So Smita will be joining soon. Friend, today we are celebrating the World Wellness Weekend, which is started by Jingi, and this initiative is today celebrated in 150 countries. Apart from that, Indian wellness tourism awareness we have started last 10 years back, and wellness tourism is one of the biggest industry which will create the huge employment as well as the new oh, wellness side of India, because India has a various way to showcase, including language, including food, geographically, various important places which we can definitely showcase on the world platform, as well as we can invite international tourists. I am also surprised many times we do not. Smita is joined. Just Smita. Smita has joined us. Just 1 second. Yes, hi Smita. Hi, hi. Tell Uh, me. so yeah, you can adjust. Yes, I can see. If you can put up little light on your face, so I will be able to see I'll- clear face. So, friend Smita has joined us, and you will enjoy the session with her. She is a spiritual guru. Apart from her passion about the acting, as I said to you guys, that is, she has created the huge awareness about the spiritual wellness, and I'm glad to be part of her journey. The way she talks about the spiritual wellness, I'm really I'm fan of her. Actually, she's really great, and she is well connected with her own soul, as well as she attract other soul to connect with the spiritual wellness. So Smita, before you joining, I was talking about you, the way you have started this, created the awareness about the spiritual wellness, and I'm really thankful to joining us today. Today is the World Wellness Weekend, where you have really supported me from the for the Global Wellness Day, and now today celebration of the World Wellness Weekend. So we say World Wellness Weekend, World Wellness Weekend celebration today, as well as the Indian wellness tourism. So thanks a lot, Smita. Smita, Thank you, Rekha. Thank you. uh, just I was talking before you joining to the viewers. There are the confusion about the what exactly is the wellness industry. Many of them knows, but then so many things are popping up. New modern words are popping up in the wellness industry. But the spiritual wellness, how you define and what exactly you can talk about the spiritual wellness, and how one should connect with the spiritual wellness. Yeah, now wellness, when you say Rekha, it is the body, mind, and soul that we think of, right? So, mind is, I'll break it up. Mind is when you're talking about the breath. Yoga also talks about breath, right? For me, breath is the topmost form of meditation. Besides other things that we are because of our breath starts from us and ends only when we stop breathing. All those things everybody knows. But what I feel is breath is something that is in the present, in the now. You can't breathe in the past. You can't breathe in the future. You can only breathe in the now. Can you Right. hear me? There is some disturbance, voice disturbance. So you can only breathe in the now. So for me, the now, the present for spirituality, now and the present moment is the most important moment. So that is to breath, okay? Body, of Right. course, doing yoga and all these things which you take care of, that is not my scene. Though I do my exercises and my yoga, that's a different thing. But I connect to the soul and the mind. Okay, so that is my forte where spirituality comes. Okay, now soul. When you look at your soul, most people's souls are undernourished. Yeah. Right.
When I scan people, when I can just look at people and I can just scan people and I can tell they are all perfect. Their bodies are perfect. Everything is all perfect and everything. But when you scan the soul is very undernourished. And the soul is the only thing which you go with when you leave your physical body. So if you leave with the soul so undernourished, you know what's going to be the result. So for a spiritual person, what you need is the nourishment of the soul. Right. And the soul can be nourished only with spirituality. Spirituality also has got various ways. It is vast. For me, my forte is chakras. Okay, so Right. I teach chakras. I correct chakras. There's all that is there, which people can see on my website www.smitajaikar.com if they want to know more in detail. But Right. chakra is balances your inner world and your outer world. You can't say if you're spiritual, okay, now I give up everything. Now I'll wear only white clothes or saffron clothes, wear a big, huge Rudraksh mala and big tikka. All that I'm not interested in. I'm interested in your inner journey. So your inner world and outer world has to be a balance. It's like two wings of a bird, right? Unless it is a balance, you can't fly. You can't soar. So Right. chakra is the only way which keeps your inner world and outer world in complete balance. And chakras take care of your physical, mental, spiritual, emotional, financial, relationships, health issues. Everything comes under the chakras. If your chakras are aligned and activated, 80 to 85% of your problems will vanish. Right. And I've been doing this not for, that I've been doing this not for just 5, 6 years. My whole spiritual journey is about 35 to 36 years. Wow. Yeah, and this chakra classes and all that I've been taking for more than 25 years. So I am deeply into it. I've learned all this from my masters. A lot of work is done on me for the past 35 years. Not a single day have I missed out on doing my chakra dhyana. Every day, the chakra dhyana. So for me, it is most Smita, important. because many of them they don't understand how chakra works, and as you said, that is it's undernourished. Their soul is undernourished. But how people will understand that? What exactly they should be doing for themselves to clear their chakras and then nourish their Yeah. soul, See, right? How? I've got on my YouTube, I've got a link about how to do the chakra meditation. Right. It is there. So somebody wants to start, they can start right away how to do it. Now, Right. if your soul is undernourished, nobody will be able to tell because you don't touch the soul only. Your inner journey has not started only. A lot of people are living in the outside world, but I have nothing against that. I also live in the outside world. But I have my Right. inner journey going along with it also. So you must have your inner journey going. Most people are not even aware. They have never looked at themselves. They've never looked at themselves. They don't know. And then when old age starts setting in, is when the true self starts hitting you on your face. Most people can't accept age. Most people can't accept going grey or wearing glasses. Most people, especially in our industry, everybody wants to hide that. There's nothing wrong in that. You can do that. But be aware of it from inside. You're not aware inside. You're only living in the outside world. Who are you? What is your purpose of life? Why have you come here? These are the questions we should ask yourself. We have not taken human birth just like that. There is a purpose to our life. So what is it? Start that journey. Start self-inquiry. That is what is spirituality. Understand that. That when somebody says something to you, you're immediately hurt. You get into gossip so easily. You judge people so easily. How is that? I mean, certain things you just ask yourself. And most people, what happens is when some calamity or some tragedy happens to them, then they wake up. Now, don't wait for that. For me, I would say I didn't have to go through anything like that. Luckily, I just met my masters at the right time. So don't wait for tragedies to happen in your life for you to wake up and say, oh no, I have to find out what is all this life about. Right. Correct? Why do you want one support from life?
for you to start understanding what life is. Can't you do it just like that? And my experience, Rekha, I enjoy both the worlds. You've seen me. I enjoy both. I love going for parties. I love doing ha ho. I love doing masti, all that. But at the same time, my inner world is also going at the same pace. That is what is required. You need a balance of both worlds. Right. Mm. Right. So Yeah. so many time people do not understand, like, how they can detach and how they can attach, you know. Yes. So what you are saying, like, you love to go to parties, and everyone, we like, We in a all love. modern world, many of us, we are party lover, and we like to meet friends, we like to go outing and all, everything. But at the same time, how we can go inside of our, yes, the body, or inside of our mind, or clear our soul, many time, Yeah. many time people get confused about that. So what do you Yeah. think, like, what exactly spirituality they should follow, or any ritual or something No, they should follow? no, there's no ritual. From my point of view, I can tell them you'll start doing the chakra meditation. You'll yourself feel the difference. In about 8, 10 days, you'll feel there's something changed. Something has Few shifted. people are requesting to talk in the Hindi also, if you ओ can. आई ओ नो प्रॉब्लम. तो कई बार ऐसा होता है कि हमको खुद नहीं पता चलता हम किस मार्ग पे चले, All right. कौन सा वे एक्सेप्ट करें, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी बहुत वास्ट है. तो मेरा एडवाइस अगर आप माने, आप एटलीस्ट चक्र ध्यान से शुरू करें. इट इज नॉट अ रिचुअल. ये मेडिटेशन है. चक्रास, आप कहीं पे भी बॉर्न हुए हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में, हर इंसान ये 7 एनर्जी सेंटर्स के साथ ही जन्म लेता है, विदाउट एक्सेप्शन. सो ये किसी इज्म से रिलेटेड नहीं है. मतलब ये हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, नहीं है. ये हर इंसान को एप्लीकेबल है. इसलिए मुझे अच्छा लगता है. मुझे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं अच्छी लगती, मुझे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अच्छी लगती है. तो चक्रास इसके लिए मुझे अच्छे लगता है कि क्योंकि वो हर एक को एप्लीकेबल है. तो अगर आप चाहें तो इसे ट्राई करें. करें तो सही, कुछ तो करें, कहीं पे तो शुरुआत करें. अगर आपको नहीं पता चलता कि कहाँ पे शुरुआत करें, तो इससे तो शुरुआत करें आप. Yeah, that's correct. या Instead of हम लोग राह देखते बैठे कि कुछ बहुत बड़ा करके देखेंगे, या तो पूरा हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे. So you mean to say start somewhere you should at एग्जैक्टली. least start, you know. एग्जैक्टली. स्टार्ट समवेयर एंड टेक बेबी स्टेप्स, बट टेक सिंसियर स्टेप्स. Right. छोटे Right. छोटे कदम उठाओ, लेकिन बड़े सिंसियरिटी से उठाओ. Right. कुछ चीजें आपको हिट करनी चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि नो, आई वांट टू बिकम लाइक दिस. फिर क्या So होता है, एक 40-45 की उम्र में ना आप सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है. यू हैव, मोस्ट पीपल हैव ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, yeah. कोलेस्ट्रॉल. ये सब बिन बुलाए मेहमान है. ये एक पर्टिकुलर एज के बाद आ ही जाते हैं. Right. जिस तरह से जिंदगी आपने जी है, वो टेंशन लेके, वो सारी चीजें लेके आपको हैंडल नहीं करना आता है. कभी कभी आप उसी जोन में रह जाते हैं. देन यू गो इनटू डिप्रेशन एंड ऑल दैट. So you don't need to do that. Nothing of this thought will happen to you if you do your chakra meditation every day. ये मेरा दावा है, ये मैं प्रूफ करके बता सकती हूँ. ये मेरा दावा है. आप चक्र मेडिटेशन करें, आपको कोई भी हेल्थ, मेंटल इश्यूज, हेल्थ, फियर, एंजाइटीज, ऑल दैट विल ऑल गो. So स्मिता, ये चक्रा मेडिटेशन, जब मेडिटेशन की बात आती है, तो मेनी ऑफ देम ऑलवेज कंप्लेन कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता है मेडिटेशन में, राइट. सो वजह क्या होती है इससे, कि क्यों कंसंट्रेशन नहीं होता है, या या तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस वेयर दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेडिटेशन. हाँ, most people don't know what is meditation. Most people राइट. don't know. Now there are two best type of meditation. One is breath watch. बट ब्रेथ वॉच आप शुरू करेंगे, तीसरे सेकंड पे आपका माइंड कहीं और चला जाता है. राइट. तो आई विल रेकमेंड डू अ एक्टिव मेडिटेशन. जैसे चक्रा मेडिटेशन, आप जब उसकी जो चैंटिंग करते हैं, तो आप एक्टिवली उससे पार्ट लेते हैं, तो आपका माइंड इधर उधर जाने की संभावना बहुत कम है. ओके. सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को मिक्स कर देते हैं. बहुत लोगों को ये डर लगता है, अरे बाबा इस मार्ग पे मैं चलती जाऊंगी तो मैं सन्यासिन बन जाऊंगी, मैं बिल्कुल डिटैच हो जाऊंगी. ये सारा कुछ भी नहीं होता. मैं 35 ईयर्स से इसमें हूँ. मैं किसी चीज से, मैं सब कुछ एंजॉय करती हूँ. ये दिस इज अ मिथ. ये गलत सोच है. ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता है.
तो डरिए नहीं, बट दिस इज टू इम्प्रूव योर सोल। एंड जो आप आपके सोल के साथ लेके जा रहे हैं वो ओवर लाइफ टाइम जाता है, मतलब सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, जितने भी जन्म आप लेंगे वो आपके साथ चला जाएगा, वो आपके साथ जाता रहेगा। Yeah, that's correct. And spirituality and like मैं कोई भगवान के इसमें जाना, because many of them they don't follow the any this what is that the I would say they going to the temple or going to the masjid हाँ, or anywhere, so they don't follow that, they don't like to go, but they then don't need to, always they they don't have connect that to, spirituality with yeah, the any god or anything, so that is not correct. Spirituality is for the your own self, chakras self, cleaning system. connect with yourself। Right, right, right. so बहुत सारे so लोगों को अपने आप से मिलने के लिए डर लगता है, yeah, अपने आप से मिलने के लिए डर लगता है, आप अपने आप से नहीं मिलते हैं, बिकॉज सेल्फ जब बाहर आता है तो इतनी सारी गंदगी आ जाती है बाहर, तो आप मिलना नहीं चाहते सेल्फ को। तो right. मेडिटेशन इज मीटिंग योर सेल्फ, इन सिंपल और वर्ड, टू और मीट योर सेल्फ। बहुत बार ये होता है स्मिता कि whenever you listen any other negative thought process around you, you are carrying that aura all over wherever you are traveling, that all this like no we said like mind में आपके दिमाग में जो चीज घुस गई है, कोई निगेटिव थॉट्स है, वो अगर आपके माइंड में चला गया है तो व्हाट हैपेंस दैट इज that negative thoughts eaten up your whole day actually, करेक्ट, so that is the reason you have to clean that immediately. You have to sit quietly for 5-10 minutes and you should clean that. Otherwise then that negative one thoughts spoil your whole day. You must have, करेक्ट, many of you realize that. So this is the things which happens with everybody. किसी ने करेक्ट, आपको गलत कुछ बोल दिया है कि या तो आपसे निगेटिव कुछ बात कर लिया है तो आपका पूरा दिन स्पॉइल होता है। ये होने की वजह है बिकॉज यू आर कैरिंग ऑल दिस थॉट्स इन योर माइंड। सो व्हाट स्मिता जी इज सेइंग दैट इज क्लीन योर ओन ओरा, स्टार्ट क्लीनिंग दैट इन द स्मॉल स्टेप्स। आपको बड़ी स्टेप लेने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे स्टेप लेके आप आपके चक्रास को क्लीन कीजिए। उसके वजह से जो आपके अंदर खुद के अंदर आपको जो महसूस होगा, अंदर के चेंजेस आपको महसूस होंगे, वही आज स्मिता जी आपको बता रही है। सो आई वुड लाइक टू अगेन आस्क यू स्मिता जी, जस्ट India has so many spirituality historical places. What I would say that is not tradition but historical places. Where do you think that is international travels? Because today we are also celebrating the Indian wellness tourism, right? So do you think that is internationally people, of course they love Indian culture, so this spirituality, people has to come down to India and learn these things from India, or they should study about this. So there are the chances for the wellness tourism where the spiritual wellness can really take a bigger place in the wellness travelers, like people whomever wants to travel to India. yeah, So true। what is your thoughts about this? What do you think about this? It is a universal thing, it is for every human being, it is not for India, Western countries, ऐसा नहीं है। हम So इंसान you हैं got a तो हर hello इंसान from के लिए। Sydney. Sydney people are also joined here, so they are saying हाउ hello नाइस, to you. हाय, नाइस, I'm glad that internationally also we are reaching so Yeah. far। तो बट इंडिया इज द हब ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये इंडिया में स्पिरिचुअलिटी जो है वो है। तो यूजुअली बाहर के लोग जो है वो ज्यादातर इंडिया में आके सब कुछ सीखते हैं। एवरीबडी नोज अबाउट इट, इट इज नॉट अ हिडन फैक्ट, सबको पता है, करेक्ट। Right. सो या, सो इट इज नॉट रिजर्व ओनली टू इंडियन। सिर्फ इंडियंस को स्पिरिचुअल होना ऐसा नहीं है, ये ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअल होना है। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड। So my guru, my master, Maitreya Dadashri ji always says, today is the need of the hour to transform your heart and transform your mind. Transformation is very, very, very important. So we need to be transformed human beings. हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पूरे अर्थ को, what we have seen in this COVID time, we have seen what we have done to the planet. So unless humanity transforms, हम
पता नहीं क्या होने वाला है आगे चल के। So when people has to do the chakra cleaning, I'm coming back to your previous point. So where can they go and how they can start their this small steps? या How सो they can मेरा start? मेरा यूट्यूब पे वीडियो है चक्रस के ऊपर। मेरे ऑलमोस्ट अबाउट 500 550 580 वीडियोस है स्पिरिचुअलिटी के। आप देख Right. सकते हैं मेरा चैनल का नाम वही है, स्मिता जयकर। मेरी वेबसाइट आप चेक करें। चक्र ध्यान आपको स्टार्ट करना है तो वो यूट्यूब में है मेरे, उसको फॉलो करके आप स्टार्ट कर सकते हैं चक्र ध्यान, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ यू वांट एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी। वेबसाइट पे मेरा नंबर है, सब ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मेरा नंबर है। आप फोन करके, मेरा मतलब मेरे मेरे टीम का नंबर है, मेरा ऑब्वियसली आई कांट गिव माय पर्सनल नंबर, तो नंबर है जिस जहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप ये जर्नी को आगे लेके जाएं। मेरी मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। मेरी बहुत सारी मोडालिटीज है, बहुत सारी मोडालिटीज है। अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। बट एनी वेयर यू कैन स्टार्ट, बट प्लीज स्टार्ट। या सो स्मिता जी बार बार जो बता रही है आपको कि आप कुछ ना कुछ शुरू कीजिए आपके लाइफ में। जैसे हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन अच्छा जाना चाहिए तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, उसी के साथ साथ एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए तो फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा। हम लोग हमेशा वेलनेस में बोलते हैं बॉडी माइंड और सोल, पर सोल को क्लीनिंग के लिए क्या करना चाहिए? ये जो आपने आज सुना है, स्मिता जी ने जो बताया है आपको कि सोल क्लीनिंग के लिए सिंपल स्टेप है, चक्रा क्लीनिंग से शुरुआत कीजिए आप। उसके आगे के कोर्सेज ऑफ कोर्स दिस शी हरसेल्फ इज प्रमोटिंग एंड क्रिएटिंग गिविंग दिस कोर्सेज। और मुझे एक ताजुब से आप में से आपको सबको ताजुब हुआ होगा कि 35 ईयर्स से स्मिता जी स्पिरिचुअल वेलनेस की बात कर रही है। मैंने आपको उनके ज्वाइन होने के पहले भी बताया था कि शी इज द पर्सन बिहाइंड द स्पिरिचुअल वेलनेस, जिन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया है वेलनेस का और स्पिरिचुअल वेलनेस का। सो आई एम रियली ग्लैड टू ब्रिंग हर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और स्मिता जी आप जो बता रही है उससे अगर लोगों को अगर बेनिफिट डेफिनेटली होता है छोटे स्टेप लेने से, सो आई एम दे विल बी लाइक फ्रॉम हार्ट दे विल बी ब्लेसिंग यू। और आपका मैंने वही देखा है, यू हैव बीन ऑलवेज स्प्रेडिंग सो हाईली और स्प्रेडिंग दिस स्पिरिचुअल वेलनेस का। और कंफ्यूजन जो है दिमाग में, लोगों के अंदर जो दिमाग में कंफ्यूजन है, बिकॉज न्यू लाइक नो यंगस्टर फॉरगेट अबाउट न्यू दिस वन, बट यंगस्टर्स दे डू नॉट वांट टू एंटर इनटू द कोई रिलीजियस में, उनको जाना नहीं है, उनको करेक्ट। उनके खुद की आइडेंटिटी जब क्रिएट करनी है तो जब पर्सनालिटी एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी व्हेन यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ। सो हम लोग हमेशा बात करें कि फिजिकली आपको फिट होना है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, ये सब बातें हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअल क्लीनिंग इज सो इम्पोर्टेंट। ये लोगों के दिमाग में सबके यंगस्टर्स बेसिकली यू हैव टू लर्न अबाउट दैट, बिकॉज स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड टू यू, एक थॉट आपका पूरा दिन स्पॉइल कर देता है, पूरा दिन आपका खराब कर देता है, एंड समटाइम वीक on month also goes behind that one thought। तो ये जो है आपके राइट या या एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से इज बॉडी के लिए हम इतना बॉडी का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ये करते हैं, इतना क्या क्या करते हैं बॉडी के लिए, पर बॉडी भी आपको छोड़ के जानी पड़ती है ना। यहाँ पर आपकी बॉडी नहीं जाती है आपके साथ, जो जाता है वो सोल ही जाता है, जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। राइट राइट। और एक एक होता है स्मिता जी, एक हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जब आप सोते हो तो आपका सेकंड माइंड आपका ओपन अप होता है, राइट? सो दैट सेकंड माइंड सबकॉन्शियस, मीन्स व्हाट इट एग्जैक्टली इज यू अ वुड लाइक टू सबकॉन्शियस से माइंड। अबाउट दैट? Yeah, the conscious mind is sleeping, but the subconscious mind is always awake and alert. So subconscious mind में जो फीड होता है वो कायम स्वरूपी आपके पास रहता है। It will remain with you always, whatever goes into your subconscious mind. Conscious mind will create havoc in your head. राइट। Conscious mind आपको दुविधा में डालता रहता है हमेशा। सो Conscious mind is the ego. So this subconscious mind, when you we said this, that's awake, like whenever you are sleeping, your body, that means it is clearly showing, ये clearly दिखा रहा है आपकी बॉडी और आपका माइंड, ये दो डिफरेंट चीजें हैं।
और दो डिफरेंट चीजों को आपको डिफरेंट वे हैंडल करना जरूरी है, राइट? बैलेंस होना चाहिए इन सारी चीजों का, बॉडी माइंड एंड सोल का बैलेंस, एंड दैट होल थिंग इज कॉल्ड योगा। पर हम लोग योगा का क्या है, सिर्फ एक्सरसाइज पे ही पड़े रहते हैं, बाकी की चीजें। आपके लिए एक सवाल है स्मिता जी, हाउ टू डील विथ पीपल हु कॉन्स्टेंटली नैग यू? Instead of pointing So, fingers at others, you change. स्मित, So you change. What needs to नहीं, change आपको in you? आपको वापस बताना होगा क्योंकि आपका आपका वीडियो पॉज हो गया था, आपको वापस बताना Okay. होगा। So Yeah. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप सामने वाले को नहीं चेंज कर सकते. You cannot change the other person. So do you, instead of pointing finger कि वो nagging है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, that is being judged. Instead of pointing fingers at others, you are being judgmental. दूसरों की तरफ उंगलियां ना उठाओ, आप अपने आप को चेंज करो, सामने वाले सब चेंज हो जाएंगे। राइट। So nobody और wants to change themselves. Everybody wants to change you. Rekha, why are you not like this? Why are you not like this? So instead of pointing fingers at Rekha, why can't I change? Because Rekha will think that this is wrong about me, that is wrong about me. So it's a catch-22 situation. दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, बदलेगा कौन? और समटाइम्स स्मिता, ये नहीं, हम लोग सोचते, बहुत बार ये होता है कि सामने वाले को शायद आपको नैग करके आपको हमेशा इरिटेट करने की आदत होगी, या तो उनका इंटेंशन वो होगा, और बिकॉज दैट पर्सन इज थिंकिंग इन नेगेटिव वे अबाउट यू, you want to No, again again, take a deep again, dive I in will it. stop. I'll stop here. Nobody is thinking, nobody is like that. Don't point fingers कि ये फलाना आपकी नेगेटिविटी Right, के बारे में right. सोचता है। सामने वाले पे उंगलियां उठाना बंद करो। Stop being judgmental. Period. आप सुखी हो जाएंगे। दूसरे की नुक्स निकालना टू गेट रिमूव फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, ये हमारा पास्ट टाइम है। इस चीज को प्लीज निकाल दीजिए। स्पिरिचुअलिटी का और एक ये एक स्मिता, बिकॉज वी बोथ आर कमिंग फ्रॉम द मराठी बैकग्राउंड, आई वुड लाइक टू से पीपल लाइक निंदकाचं घर असावं शेजारी, हे एक दिस इज वन प्रोब विच इज ऑलवेज टॉक इन यूज मराठी कम्युनिटी। सो ये इसका मतलब यही है कि जो कोई आपके बारे में बोल रहा है, इनफैक्ट दैट पर्सन शुड बी नेक्स्ट टू योर डोर. So करेक्ट that time is a real test for you, as how you as a whole soul yourself and how you are able to control yourself. So these are the things which is very important what you are saying, that is, stop pointing others. You have to take care of your own yourself. करेक्ट And this is what we are talking about, the spiritual wellness. Spiritual wellness teach you, first, the cleaning the chakras, what you are talking about, that cleaning chakra itself will change your whole life. It will definitely help you to clean your whole thought process. जब हम लोग बोलते हैं कि मिरर में आप देखते हो, खुद को देखते हो, तो मिरर में आप खुद ही खुद को दिखाई देते हैं, राइट? So this is the way what you have to think about that. Spiritual wellness is talking internally. You yourself is looking inside your body and you are just studying about yourself, what you are. So when you start thinking about that, or you start studying about yourself, so negative, positive points, both points automatically visible to you, and definitely that all these things clear by the spiritual wellness. और जो स्मिता जी बता रही है, स्मिता जी आपको, और what do you think people should, apart from the cleaning the chakras, what other activities they can do to clean themselves or clean their soul? Yeah, do whatever. If you're connected to any spiritual organization, वहाँ spiritual organization में बहुत सारी processes होते हैं ये cleansing के, वो करिए। अगर आपके पास कोई spiritual organization और इस दुविधा में आप है कि which spiritual organization can you join, I can only suggest the spiritual organization that I am connected to, which is मैत्री बोध परिवार। वो मैत्री बोध परिवार का आप YouTube पे ये Google पे सर्च करिए, आप उधर ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ कहीं पे शुरुआत कीजिए। अगर आप यूनिवर्स को ये बोलेंगे ना, मुझे इस रास्ते पे चलना है, हजारों द्वार खुल जाएंगे।
हजारों दरवाजे खुल जाएंगे. There is so many doors that will open to you. You will not know where to go. There is so much. But allow yourself to accept this positivity. Allow yourself. वो बंद करके रखा है ना, अपने सेल्फ को बंद करके रखा है, उसके दरवाजे खोल दीजिए. ऑटोमेटिकली सामने से आपको ये मिलेगा सब कुछ. बहुत चीजें हैं करने के लिए, बहुत है. कहीं पे शुरू कीजिए, that's all. So if you don't know where to start, I will suggest you do the chakras. फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको सुनाई दे रहा होगा, कहीं पे शुरू कीजिए, कहीं पे शुरू कीजिए. सो फर्स्ट स्टेप, यू ऑलवेज हैव टू पुट योर सेल्फ फ्रंट, यू नो, यू हैव टू ऑलवेज टेक फर्स्ट स्टेप. हम लोग बोलते कि एक कदम आप आगे बढ़ाओ. एक कदम आप आगे जब बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इन अ डिफरेंट जोन. सो और वो कदम आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो भी थॉट्स प्रोसेस आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर योर ओन सोल. स्पिरिचुअल वेलनेस में आज स्मिता जी आपके सामने आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है. और 35 ईयर्स से शी हैज बीन क्रिएटिंग द अवेयरनेस. तो मुझे एक बताइए, जाते जाते एक आपसे सवाल है. आप फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे कितने फिल्म कर चुकी हो आप आज अभी तक? हाउ मेनी फिल्म्स यू हैव डन? सॉरी टू आस्क यू almost out of the box question. More than 200 at least I must have done. Some films have come to the theater, some have been dumped inside, but around 200 to at least I have done. So because the film industry where you are working is mostly double profile industry, I would say, कि जहाँ पे लोगों को दिखाना कुछ होता है और actual person is different. We all know this one, you know, as a personality is different and as a character what they are working is a different, right? So that time, what do you think, like, your spiritual wellness must have helped them lot many people through you in the film industry. So in the film industry, what happens? You're always playing somebody else. You're hardly yourself. आप इतने उसमें फंस जाते हैं कि आप अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं, वो कैरेक्टर बन जाते हैं, अपने बारे में एक इमेज तैयार करते हैं. लोग people form an image about you. So we are trying to maintain that image. So you are actually never meeting yourself. When actors meet themselves when they become old, and then they can't handle it. बुढ़ापा they can't handle, चश्मा लगना they can't handle, थोड़ा सा मोटापा they can't handle, कुछ भी handle नहीं कर सकते, because that is your true self. तो ये सारी चीजें ग्रेसफुली हैंडल करना यही स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है. You know, always we are playing something else. Now forget actors, even we, normal human beings also. Now you are the ambassador for wellness. You are playing that role. You are a mother. You are a wife. You are a grandmother. Whatever, जो भी roles हम play करते हैं, we are playing different roles, ना? अलग अलग मुखौटे लेके, अलग अलग मास्क आप चढ़ाते हैं ना हर टाइम पे, कहाँ जाते हैं वहां पे. तो आप खुद कब होते हैं? रात को आएंगे, सो जाएंगे, चलो दूसरा दिन वापस शुरू. So when do you meet yourself? Right. Tell me, when do you meet yourself? When do you ask yourself, are you okay? What do you want? Do you speak to your body? Body, mind and soul, do you ever speak to your body? Ask your body, thank your body. ये बॉडी है, इसके लिए आपका अस्तित्व है. जिस दिन बॉडी ठप करके गिर जाएगी, खत्म हो गया आपका अस्तित्व. तो बॉडी को कभी थैंक यू बोलते हो? राइट. तो ये सारी चीजें, यही सारी चीजें हैं. Thank you. Thanks a lot. We are running out of the time, but it's really beautifully connecting with you, because हमेशा मैं वही बोलती हूँ कि आपके thought process में I really get lost. Actually, मुझे इतने अच्छा लगता है, इतना, means I really love to talking to you about all the spiritual wellness activities what you are doing, and really great work whatever you are doing, and really helping the society, because this is a need of the time, and you are really doing great job for this. Thanks a lot for the joining today for the World Wellness Weekend celebration, as well as the Indian Wellness Tourism. Thank you guys for joining us and supporting us for these initiatives, and please keep on watching us. Today again I'm coming back 7 o'clock with the fitness guru, and please join us. And Smita Jaikar is again I'm telling you guys, Smita Jaikar is the name behind the spiritual wellness, and 35 years is not a small period where people were not even knowing the wellness, and that time she has started creating the awareness about the
spiritual wellness. So hats off to her, and thanks a Thank, lot for joining. Thank you. thank Bye you, Rekha. bye. Thank you. Bye. See you.